Cauchy theorem on finite Abelian groups. Cauchy theorem on finite Abelian groups. स्टेटमेंट है let G be a finite Abelian group. Let P divides order of G, where P is a prime number. Then G has at least one element of order P. अगर G फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और P उसे डिवाइड कर रहा है तो G के अंदर कम से कम एक एलिमेंट P ऑर्डर का होगा. प्रूफ. If order of G is equal to 1, then G is equal to identity group. Clearly, G does not have any element of order P. It implies P does not divide order of G. Therefore, by contrary proof, the theorem is true for n is equal to 1. Let A belongs to G be arbitrary such that A is not equal to identity. As P divides order of G, it implies either P divides order of A or P does not divides order of A. केस 1 कर रहे हैं. Let P divides order of A. Suppose order of A is equal to M.
It implies P divides M. It implies there exists R belongs to natural number such that M can be written as P into R. Now क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज एम तो ए रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एम की वैल्यू रख देते हैं तो ए रेस्ट पावर पी आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. इट इम्प्लाइज ए रेस्ट पावर आर रेस्ट पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. It means either order of a raised to power r is equal to p or order of a raised to power r divides p. दोनों में से एक केस होल्ड करेगा. If order of a raised to power r is equal to p, then we have an element a raised to power r belonging to G such that order of a raised to power r is equal to p. Hence the result, it means done. If order of a raised to power r divides p, p is a prime number, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट पावर आर या तो 1 होगा या फिर p होगा. Let order of a raised to power r is equal to 1. It implies a raised to power r is equal to identity. It implies order of a is equal to r less than m. Because r is least positive integer such that a raised to power r is equal to identity, which is a contradiction. ये contradiction है because order of a is equal to m. Hence order of a raised to power r is equal to p. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट टू पावर आर इज इक्वल टू पी आ जाए तो ऑलरेडी डन. केस 2 कर रहे हैं. Let p does not divide order of a. Let us assume that the theorem holds for all k
1 is less than k less than n, we will prove that the theorem holds for n. Since order of A is equal to m, suppose H is generated by A, it implies order of H is equal to order of A is equal to m. As P does not divide order of A is equal to order of H is equal to m. Because G is abelian, और हमें पता है जी का अगर जी अबेलियन हो तो उसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है, तो इसका मतलब H इज नॉर्मल टू जी फॉर ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी. इट मीन्स जी बाई एच एग्जिस्ट्स. As P divides order of G, it implies P divides order of H into order of G by H, but P does not divides order of H, it implies P divides order of G by H. Also, order of G by H is equal to order of G but order of H, which is equal to n by m strictly less than n. As order of G by H is less than n, it means the theorem is true for G by H whose order is less than n. Therefore, there exists an element BH in G by H where B belongs to B, where B belongs to G, such that order of BH is equal to P. It implies BH raised to power P is equal to identity of G by H यानी H. It means B raised to power P H is equal to H. It means B raised to power P belongs to H. But H is generated by A, so B raised to power A can be written as A raised to power S
for some s belongs to integers. For some s belonging to z. As order of a is equal to m, it implies a raised power m is equal to identity. दोनों तरफ हम पावर m ले लेते हैं. बी पी रेस्ट पावर m इज इक्वल टू ए एस रेस्ट पावर m को अंदर शिफ्ट कर दिया, ए रेस्ट पावर m आइडेंटिटी हो गया. तो इसका मतलब बी रेस्ट पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया. तो इट मीन्स बी रेस्ट पावर m रेस्ट पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया. अब यहाँ पर दो केस फिर से अराइज हो गए. आइदर बी ऑर्डर ऑफ बी रेस्ट पावर m इज इक्वल टू p और ऑर्डर ऑफ बी रेस्ट पावर m इज इक्वल टू 1. ये दोनों में से एक केस होगा. Order of b raised to power m is equal to 1, then b raised to power m is equal to identity belongs to h. It means b raised to power m belongs to h. But p does not divide m and p is prime. It means p और m को प्राइम हो गए. तो को प्राइम की डेफिनेशन लगा देते हैं. Therefore there exist x, y belongs to z such that mx plus py is equal to 1. Consider b raised to power 1 is equal to b raised to power mx plus py, which is equal to b raised to power mx into b raised to power py. It means b raised to power 1 is equal to, क्योंकि b raised to power m आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये हमारा b रेस्ट पावर पी वाई के इक्वल आ जाएगा. आइडेंटिटी के इक्वल है आइडेंटिटी रेस्ट पावर एक्स इंटू बी रेस्ट पावर पी वाई. तो बी रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू आ गया बी रेस्ट पावर पी वाई. क्योंकि बी रेस्ट पावर पी वाई, क्योंकि बी रेस्ट पावर पी हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बी रेस्ट पावर पी रेस्ट पावर वाई हमारा क्योंकि बी रेस्ट पावर पी हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, तो बी रेस्ट पावर पी रेस्ट पावर वाई भी एच में जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी.
It implies b raised to power 1 belongs to h. It implies bh is equal to h. इसका मतलब order of bh is equal to order of h. p divides order of bh, but order of bh is equal to p, that is p divides order of bh. It means p divides order of h. मगर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h. ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आई है? क्योंकि हमने माना था b raised to power order of b raised to power m is equal to 1. इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ b raised to power m is not equal to 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ b raised to power m is equal to p. तो इसका मतलब क्या हुआ? g के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया b raised to power m such that order of b raised to power m is equal to p. Hence the result